So we studied about dipoles, right? Last class में dipoles. Like every atom will behave like a dipole. Atom में electrons are revolving around the nucleus. If electrons are revolving means current is revolving. Whenever there is a current, there is a dipole. Two poles will be there, north pole, south pole. So in material में how many dipoles will be there? So many dipoles will be there, which will be zigzag manner में रहेगा. When we apply external field, what will happen? All dipoles will align in the direction of the field, right? Direction of field. Okay. Now इसमें very important thing, magnetic properties of materials. देखो magnetic properties of materials. These properties, these terminologies we have to know. So first terminology which we are dealing is intensity of magnetization. Intensity of magnetization को we call as I. Intensity of magnetization. And what is intensity of magnetization means? Suppose मान लो if you have a material, external magnetic field के direction में you applied all external magnetic field you applied, all dipoles are aligned in the direction of this field, right? Now क्या हुआ? What is intensity of magnetization means? Magnetic moment per unit volume is called magnetization. In particular unit volume में how many magnetic moments are there? That is called as intensity of magnetization. देखो magnetic moment per unit volume is called as intensity of magnetization. Satvik, come on. We are learning the terminologies. First one is intensity of magnetization, which I represent as I. I is magnetic moment per unit volume. इसका SI units कितना होगा? SI units is how much? Magnetic moment का SI units are ampere meter square per volume का meter cube. So it is ampere per meter is SI units. Okay. So first terminology we learned intensity of magnetization. And magnetic moment for bar magnet, you know, right? How to find magnetic moment for bar magnet? Yeah, there. North pole, south pole, poles and M. Distance between them is 12. So magnetic moment कितना आएगा? M12. M into 12. Good, very good. M into 12. Okay, ampere per meter is the SI units of intensity of magnetization. Okay, select numerical to. For the bar magnet shown here, find magnetization. I want in terms of pole strength में I want answer. Intensity of magnetization. I is equal to M by V. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये कितना? 2m by a. 2m by a. Okay, थोड़ा wrong. Area of cross section is a and length is 12, right? So the magnetic moment is pole strength into distance between them, right? M into 12 by volume is area into length. So 12 cancel. I is equal to M by A. So this is intensity of magnetization. Okay, chalo, दोस्तों. The dipole moment of each molecule, एक molecule का dipole moment is given as this one. मतलब ampere meter square is nothing but M, right? So M value for each molecule is given. Molecule is 1.5 into 10 to the power of minus 23 ampere meter square. And the number of molecules, kitna molecules are there? This many molecules are there. He's asking what is the maximum possibility of intensity of magnetization find karo bolke. Is gas mein complete gas ka intensity of magnetization I want. Total gas molecules ka, not for one molecule ka.
3 into 10 cube. 3 into 10 10 cube. cube. Okay. Magnetic moment for all molecules कितना होगा? This is for number per unit volume, right? One volume. So one magnetic moment is 1.5 into 10 cube, 10 for minus 23. This for one molecule into total number of molecules कितना है? You have 2 into 10 power of 26 upon unit volume, right? One volume. Okay. So how much you got? So 3 into 10 cube ampere per meter. Okay. चलो एक अंडरस्टैंड करो, नोट अंडरस्टैंड करो. Magnetization increases net magnetic field inside the material. Magnetization increases, मतलब magnetization means how much dipoles are aligned per unit volume में. If I in that particular unit volume में more the magnetization, more the magnetic field. Net magnetic field. देखो ये अंडरस्टैंड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज मान लो, see initially the material में dipoles are in different order में. Okay. Now I applied, initially there is no field, because net magnetic moment is 0. दोनों cancel हो जाएगा, vectorially cancel हो जाएगा. I am applying an external field. I am applying external magnetic field. मतलब here how many fields are there till now? Only one field. One field is there. Okay, very important understand करो. External field only one field is there. Okay. Now here there is no field because cancel हो रहा है. When I apply a forcibly external magnetic field, dipoles will align. Align होने के बाद, now how much field will be there? Now how many field will be there? One is external field तो रहेगा, B external, and other one is dipoles align होने के वजह से here also one magnetic field is coming to picture. So net magnetic field will increase or decrease? Net magnetic field will increase, right? Okay. So two magnetic field will be there when we align. Before one magnetic field, after aligning two magnetic field will be there. Okay. So लिखो on alignment, the magnetic dipoles on alignment, the magnetic dipoles produce their own magnetic field, which increases net magnetic field, So net magnetic field is getting increased. Okay. चलो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी भी लर्न आई के बारे में, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, नाम याद रखो. ओके. सेकंड टर्मिनोलॉजी इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड, we represent as H. Second terminology, magnet, because these terminologies if you know, then only dia, para and ferro we can decide which one based on these properties के बेस पे. मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड H क्या है देखो, उसके लिए आपको अंडरस्टैंड करने का, कंसिडर ए सोलेनॉइड कैरिंग ए करंट I एंड सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड इनसाइड इट. मान लो देयर इज ए सॉफ्ट आयरन कोर, इज अ सॉफ्ट आयरन कोर, okay, and there is a solenoid. मतलब क्या है, this completely solenoid, right, where we wound the coil on the soft iron core, and मान लो the current is flowing. Okay, current is flowing in the wire. Here the net magnetic field here because of two factors. Net magnetic field because of two factors. लिखो the net magnetic field because of two factors. First one is external factor. Okay, external factor is because of what? Due to current carrying current coil में, due to current. Now tell me, because of current there will be a magnetic field, right? Magnetic field, and that is nothing but the magnetizing field बोलते हैं. That field is nothing but magnetizing field. Okay, this is only H. Magnetic intensity. नाम याद रखो. People सोचेगा magnetic intensity means I नहीं है. That is called intensity of magnetization. This is magnetic intensity. दोनों थोड़ा समझ में आने का. Okay. So the external factor, because of current carrying coil के वजह से the magnetic field which is coming, that is external factor, nothing but H.
एक्सटर्नल फैक्टर इज कॉल्ड एच. नाउ सेकंड वजह से इंटरनल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर, दो फैक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड विल बी कमिंग हियर ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन. ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन. ओके. एंड दिस इज आई. इसके वजह से आई इज ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन मींस इन पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में हाउ मेनी मैग्नेटिक मूवमेंट्स विल इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन, राइट. सो बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डाइपोल्स विल बी अलाइंड एंड उसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा. सो दो फैक्टर्स की वजह से आ रहा है. वन इज एक्सटर्नल फैक्टर, वन इज डाइपोल्स अलाइनमेंट की वजह से इंटरनल फैक्टर. दो फैक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग. ओके. एंड एच समझ में है. एच इज नथिंग बट सिंपली एक्सटर्नल फैक्टर बिकॉज ऑफ एम्पियर टर्न्स. बिकॉज ऑफ एम्पियर टर्न्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड. वो मैग्नेटाइज करेगा एक्स मैग्नेटिक फील्ड. ओके. एंड इसका SI यूनिट्स आर सेम एज दैट ऑफ आई ओनली, एम्पियर पर मीटर. एम्पियर पर मीटर. एच का यूनिट्स आर एम्पियर पर मीटर. नाउ आई कैन टेल लाइक दिस, net magnetic field, net magnetic field in this may is proportional to H plus I. Net magnetic field is proportional to H plus I. दोनों वजह से net magnetic field is coming, right? One is external factor की वजह से, one is internal factor की वजह से. And when I remove proportionality, B net is equal to mu naught times H plus I. Mu naught times of H plus I, and mu naught you know already is called absolute permeability. Permeability. Absolute permeability. And value you know, right? Mu naught value कितना है? 4 pi into 10 to the power of minus 7 Tesla meter per ampere. Tesla meter per ampere. So this is one formula only. B net is equal to mu naught times of H plus I. लास्ट में एक जगह में लिखेंगे फॉर्मुलास, देन न्यूमेरिकल्स करेंगे. ओके. चलो, दिस इज सेकंड टर्मिनोलॉजी. इधर H आ गया ना. H इज बिकॉज ऑफ एम्पियर टर्न्स की वजह से जो एक्सटर्नल फील्ड आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, दैट इज कॉल्ड H. एंड फॉर्मुला नेट मैग्नेटिक फील्ड इज mu naught times of H plus I. Okay. Now next one is magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility, third terminology. And we will put the symbol like this. उसको काई बोलते हैं, साई बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, जीटा बोलते हैं. जीटा. जीटा. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का सिंबल है साई वाला, उसको जीटा बोलेंगे. ओके. नाउ देखो जीटा कैसा आएगा. Tell me the magnetization of a material is influenced by external factors, right? More the external field, more the magnetization, right or wrong? Tell me. More the external field, more the magnetization. I can tell like this also. I is proportional to H. H is proportional to I, or more the magnetic moment per unit volume, more the H value. So direct relation, right? More the H, more the I. Okay. When I remove proportionality, we'll get a constant. I is equal to zeta H. This is the third formula. I is equal, I and H का relationship है, I equal zeta H. लिखो. So more the H, more the alignment, more the magnetic field. So H is proportional to I or I is proportional to H. When I remove proportionality, we'll get zeta H. So इसको क्या बोलते हैं, zeta. Zeta. Okay. Next one. Absolute permeability, magnetic permeability mu m and relative permeability mu r. लास्ट टर्मिनोलॉजीज. ये तीनों हो गए तो हो जाएगा टर्मिनोलॉजीज. ओके. नो एक एक का बारे में देखेंगे. बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली विल गेट नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है. नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ H प्लस I. दिस फॉर्मूला यूज करके वी विल डिराइव ऑल द थिंग्स. B नॉट इज इक्वल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ H प्लस I. ओके. नो इफ नो मैग्नेटिक, फर्स्ट वन इज आई एम टॉकिंग अबाउट म्यू नॉट के बारे में बात करेंगे. म्यू नॉट क्या है बोल के. ओके. इफ नो
magnetic material, magnetic material present in the solenoid, present in the solenoid, present in the solenoid. मतलब ओनली वैक्यूम में है दिस कॉइल. सपोज मान लो करंट कैरिंग कॉइल इज ओनली इन वैक्यूम ओनली, देयर इज नो सॉफ्ट आयरन कोर. कैन टेल मी विच वन विल बी जीरो, आई या एच? विच वन विल जीरो इन द कॉइल में? I. आई इज जीरो. गुड. आई इज जीरो. आई मीन्स डाइपोल्स नहीं है ना, सॉफ्ट आयरन कोर ही नहीं है, मैटिक पोल्स नहीं है. ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट हियर आई इज जीरो. एंड व्हेन आई पुट इन एयर, बी नेट को आई कॉल एज बी नॉट. बी नॉट मीन्स एयर में है, is equal to mu naught times of h आएगा, because since I is 0. So this is the formula, b naught is equal to mu naught times of h. When they ask definite definition means mu naught is equal to b naught by h, magnetic field upon the magnetizing field. किया तो you will get the things. Net magnetic field is net magnetic field by magnetizing field divide किया तो mu naught आएगा. Okay, so remember like this, b naught is equal to mu naught times of h. So first one done, mu naught done. Now second one, we are talking about mu m के बारे में. सपोज मान लो if magnetic material is present, if magnetic material is present, okay, b net को we represent as bm. magnetic material is present, bm. okay, because material है ना, equal to हम लोग क्या करेंगे, mu naught times of h plus I, right? h plus I. what is the relation between I and z, I and h का, I and h का relationship क्या है? I equal to Zeta H. zeta h, right? इसमें फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, bm is equal to mu naught times of h plus I equal to zeta h. so h कॉमन ले रहा हूँ, bm net magnetic field because of material present. okay, so net magnetic field कितना होगा, mu naught times 1 plus zeta times h. h I am taking common. okay, and mu naught times of 1 plus zeta को one more constant मानेंगे, क्या है, mu m बोलेंगे, mu m times of h, where mu m is, where mu m is mu naught times of 1 plus zeta. See, b naught is equal to mu naught times of h, bm is equal to mu m times of h, and mu m is mu naught times of 1 plus zeta. This is the formula. okay, so when magnetic material is present, we are taking the relation, we are relation ले रहे हैं हम लोग, लेके h में कन्वर्ट करके mu naught times of 1 plus zeta को we call as mu m. mu m is what? magnetic permeability. magnetic permeability, mu m. आया? Like last one, mu r, you know, right? Relative permeability. So mu r is nothing but mu m by, third one is mu m by mu naught. The ratio of magnetic permeability by absolute permeability is nothing but relative permeability. And we will write in terms of mu m is what we know, mu naught times of 1 plus zeta by mu naught. Mu naught cancel. Mu r is very important formula, 1 plus zeta. When you know zeta value, you can find relative permeability 1 plus zeta. mu m के जगह में substitute mu naught times of 1 plus zeta. So mu naught cancel, 1 plus zeta आएगा. okay, and ये भी यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, नेट मैग्नेटिक फील्ड में लिखेंगे. देखो म्यू एम के जगह में क्या डालो, म्यू एम के जगह में आई कैन सब्स्टिट्यूट बी एम बाई एच, बाई म्यू नॉट के जगह में बी नॉट बाई एच, एच एच कैंसिल, आई कैन राइट एज बी एम बाई बी नॉट. इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड में we can write bm by b naught is also nothing but mu r only. Khatam. These are the terminologies, total terminologies. Yeah.
Okay, so we will write all the formulas one place में. Finished. हाँ, चलो लिखो. First one, what we learned? I is equal to magnetic moment per unit volume. Second one, we learned Bm is equal to mu naught times of H plus I. Net magnetic field, right? Net magnetic field when the material is present. And third one, we learned I is equal to zeta H. And fourth one, when there is a no magnetic material, I call B naught is equal to mu naught times of H. And when there is a magnetic material, I call Bm is equal to mu m times of H, where mu m is 1 plus mu naught times of 1 plus zeta, right? Or write in separate formula only. Sixth formula, mu m is equal to mu naught plus u naught into 1 plus zeta. Okay. And last formula we learned mu r के जगह में. Mu r is nothing but mu m by mu naught, nothing but 1 plus zeta, and that is nothing but bm by b naught. Bm by b naught. These are formulas. 7 formulas is there. 8th formula भी लिख लो, आपको आगे आएगा. H का formula is ampere turns है ना, Ni. Ni. N is what? Number of turns per unit length. याद है ना? Number of turns per unit length. N, small n is equal to. H equal to magnetizing field is nothing but Ni. इसमें when you are taking questions करने समय sometimes आपको 1 plus zeta ऐसा कुछ वैल्यू आए तो zeta का वैल्यू सपोज मान लो 5000. सो आपको 5001 लिखने की जरूरत नहीं है. कैलकुलेशन टाइम में 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. 5000 यू कैन टेक. ऐसा थोड़ा मतलब आंसर्स विल बी वी कैन मैच, राइट? नजदीक आंसर यू कैन टेक. अगेन 5001 बना के कॉर्नर में बनाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन में डिफिकल्ट हो जाएगा. ओके, चलो बेस्ड ऑन दिस वी आर डूइंग न्यूमेरिकल नाउ. हां, टेल मी. So here is H a vector quantity? H is vector quantity. H is vector. Ni. So it's for mu naught H plus I, we're doing vector addition, right? No, ऐसा मत करो. H value will be given directly. H will be given and I will be given. मतलब see indirectly दोनों सेम डायरेक्शन में ही आएगा ना. टोटल में मोर द एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड उसी डायरेक्शन में आपको डाइपोल होगा ना. सो एडिशनली नो सबट्रैक्शंस. ओके, चलो. नाउ वी विल सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. यूज दैट फॉर्मूलास एंड वी हैव टू सॉल्व. ओके, एक क्वेश्चन करेंगे देन समझ में आएगा. देखो, एक सॉलिड इन एयर. ओके, मतलब इनसाइड देयर इज नो magnetic material, and you know this formula. First of all, for a solenoid inside magnetic field is how much? We studied in the straight wire, circular wire solenoid. Magnetic field inside the current carrying solenoid, mu naught. याद है? Mu naught magnetic field. साथ बोलो. Magnetic field inside the current carrying solenoid. We studied moving charges में straight wire, circular wire, and solenoid and toroid. म्यू नॉट एन आई, ये याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट. सॉलिनॉइड में आई टोल्ड राइट, सॉलिनॉइड में इनसाइड देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मींस एवरीवेयर मैग्नेटिक फील्ड इज सेम. वी प्रूव्ड बाय एम्पियर सर्किट लॉ आल्सो. वी डन बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ आल्सो. म्यू नॉट एन आई. ओके, सो दिस इज ओके. चलो नाउ इसका सॉल्व करेंगे. ओके, for a solenoid in air with n turns per unit length, carrying a current I, find the magnetizing field. He's asking, find the magnetizing field. Okay, what formula you will use? When the solenoid in air, there is no material, right? So B naught is equal to magnetic field is equal to mu naught times of H, right? Mu naught times of H. And same solenoid में in air में inside inside magnetic field is how much? B naught is how much? Mu naught Ni, which we learned in moving charges magnetism. Okay, and this magnetic field and this magnetic field is same, right? This magnetic field and this magnetic field is same. So we equate that one. Mu naught H is equal to
mu naught Ni. So mu naught cancel. H is equal to Ni. Khatam. N is the number of turns per unit length. That's why we wrote in the formula mein. H equal to Ni. Whenever ampere turns ka, nothing but H. Number of turns per unit length into I किया तो we'll get H. Okay. चलो नो करो क्वेश्चन से फॉर्मूला बेस्ड है. हाँ करो इंटेल आंसर्स. Magnetic induction and magnetizing field are given. Magnetic induction का symbol, magnetic induction means symbol बोलो BM. Magnetic induction means BM. मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड ओनली व्हेन द मटेरियल इज प्रेजेंट वाला. कितना दिया है? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर. 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज गिवन. एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब विच वन, विच लेटर? मैग्नेटाइजिंग फील्ड I. नहीं, आई इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. ओके. मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब करंट, करंट एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से. व्हाट इज दैट? H. The external. H is equal to 2 into 10 cube ampere per meter. Tell me, what is a symbol for intensity of magnetization? Intensity of magnetization. I. I. Magnetic intensity? H. H. Magnetizing field? H. H only. Magnetic induction means BM. BM. Okay. चलो. Is telling to find magnetic permeability. इसका सिंबल क्या है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी मींस permeability mu. Magnetic permeability means mu m. We know the relation, right? Bm, mu m, and h. So what is the first formula we learned? First one is So B. 4 minus 4. Yes. 5 into, right? 5 into 10 power minus 4. Tesla meter per ampere. Mu is always Tesla meter per ampere. First, we use formula Bm is equal to mu m times of h. Use that 8 formulas only. 8 formulas only you have to use bar bar. Okay. Now find B. What is the mu m is to find. करो. Second one is relative permeability. Mu r. Mu r. Yeah, first one आ गया ना आपको? हाँ. Second one, mu r. So we know the formula for mu r. Mu m by mu naught. Mu naught value is fixed value. 4.10 per minus 7. Mu m you know. Substitute.
how much you are doing approximately? Approximately 41.6 into 10 power 7. 10 7, why 10 7? ये ऊपर कितना है? Uh, 5 into 10 power minus 4 right. by 4 pi into 10 power minus 7, right? So ऊपर गया तो क्या होगा? 10 cube only, right? And 3 if you take also 12, and when you divide approximately like something 400 change आएगा, 400 ले लो approximately, you take as 400. 5 का लेके 3 लेके तो 400 ले लो. now करो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ससेप्टिबिलिटी का सिंबल है याद है ना? हाँ, जीटा. we know mu r, we have to find susceptibility, relation between susceptibility and mu r. हाँ, 399 and 798 into 10 power 3. yes, correct. आया देखो, ये सब्सिट्यूट आया सात्विक. म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जीटा. एंड इसका ये वाला इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन आई एन एच का वी नो ससेप्टिबिलिटी. आई एन एच का रिलेशनशिप यू नो, राइट? आई इज इक्वल टू zeta h. h value you know, zeta value you know, substitute, you will get as 7.98, you can write in points में, into 10 power of 5 ampere per meter. You think? Okay, so use the formulas and solve करो. चलो next one. चलो. A solenoid 500 turns per meter. मतलब what is given, capital है ना small है ना? Number of turns per meter. Small n. Small n they given as 500. Current carrying I is equal to 3 ampere. And relative permeability mu r is given as 5000. Determine the magnitude of magnetic intensity. Magnetic intensity means what you have to find? H. H. And magnetization I. And magnetic field inside the core, मतलब BM. When the core is present, net magnetic field is BM. H ka formula you know, when the number of turns is given, I is given. Do we approximate zeta for this question? Yes, approximation कर दो. So first of all, H value how much you got? H value? 50. Yes. And if I, how to find I? Zeta h. Zeta H. So 49, how much you got? Zeta value you got, right? 494999, right? 5000 कर लो. So that easy हो जाएगा आपको कैलकुलेशन के लिए.
So both of them are 75 into 10 power 5. I is how much? 75 into 10 power of 5. I. And BM? 75 into 10 power No, 5. why? Mu naught, what is the formula? Mu naught times of H plus I, right? BM is material inside net matter field is mu naught times of H plus I. I value no, H value no, mu naught value no, 4.10 power minus 7. That one you have to use. 4 pi into 10 power of minus 7 into H is 1500 plus 7.5 into 10 power of 6. His scientific notation मालूम है ना? Scientific notation? You have to write always like 75 into बड़ा number 10 से below greater than 1. Okay, greater than equal to 1. So approximate answer. देखते हैं कितना अप्रोक्सीमेट करेगा. फर्स्ट लेटर शुड बी सेम आने का मुझे. एक लेटर फर्स्ट नंबर. साथ ही मैथ्स देखता हूँ. So approximately 9.5. अरे वाह सुपर. अप्रोक्सीमेट गया आपका पूरा कैलकुलेट किया. अप्रोक्सीमेट किया ना. ओके चलो. 9.426 टेस्ला. या approximation 9.426. Okay, chalo. Next one. Iron rod 10 power of minus 4 meter cube. Matlab what is given, that is 10 power of minus 4 meter cube means Volume. volume. Good. Volume is 10 power of minus 4 meter cube. And relative permeability, you know, mu r is 1000. Is placed inside the solid of 5 tons per centimeter. Matlab small n. They convert into meters. 5 tons per 10 to the power of minus 2. Matlab it is nothing but 500 turns per unit length. Okay. If a current is this much I pass in a solid में 0.5, then the magnetic moment of the rod, M value is asking. Magnetic moment of the rod. Try करो. Volume दिया, magnetic moment find करेगा. So relation between में capital I आएगा ना? I you can bring, right? Volume is given, magnetic moment we have to find. So I is equal to M by V I can use. मतलब volume is given. I if I can find then कला same आ जाएगा. Right. Approximately 25. Oh, super good. तो फास्ट क्यों कर रहे हैं? किधर से मतलब और ओपन एआई यूज करके कर रहे हैं क्या? मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आंसर बोल रहे हैं. ओके. तो 25 इज द आंसर. सो मैग्नेटिक मूवमेंट आई आने के लिए आई कैन यूज आई इक्वल जीटा एच. H I can find by using the formula Ni, and zeta I can use with the help of mu r. Mu r is equal to 1 plus zeta. So zeta आ जाएगा, H आ जाएगा, then I आ जाएगा, I सब्सिट्यूट किया तो M आ जाएगा. ओके चलो. So your answer is 25. चलो now we'll study this one, dia, para and ferro.
So first little bit we'll see what is happening. Dia para मैटिक पूरा खेल पूरा क्या है, डाइपोल मूवमेंट की वजह से, पूरा मूवमेंट की वजह से थिंग. See basic thing you have to understand. Diamagnetism, paramagnetism and ferro में which is repulsion will take place. रिपल होने वाला कौन सा मटेरियल है, रिपल वाला जनरली, कैन यू गेस? Paramagnetism. सात्विक, आउट ऑफ दिस थ्री में विच वन विल बी रिपलिंग विल हैपन? गेस करो. नहीं है, it is diamagnetism. Suppose this diamagnetic material is there. I take a magnet, I will bring closer, diamagnetism will run, रिपल होता जाएगा, रिपल हो जाएगा. ये वाला अट्रैक्ट करेगा, ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. ये वाला बहुत ओवर करते हैं, ये थोड़ा अट्रैक्ट करते हैं, ज्यादा अट्रैक्ट कर देते हैं. ओके, बहुत मतलब ये थोड़ा वैल्यूज और लेस, इसका सेम वैल्यूज ये ज्यादा रहेगा. तो ये बहुत तगड़ा मैग्नेटिज्म है. ओके, पूरा रिपल्शन वाला ओनली डायमैग्नेटिज्म है. ओके, चलो डायमैग्नेटिज्म के बारे में लिटिल बिट लर्न करेंगे. एक आगे तो रिमेनिंग सेम मॉडल में करने वाला है. Okay, first understand, in atoms, some materials, electrons are paired, right? Electrons are paired. And the magnetic moment of the paired electron cancel each other, and net magnetic moment of the atom is 0, right? We studied starting में, what is meaning of chemistry में पढ़ा होगा ना, ऑर्बिटल में एक मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है, दोनों कैंसिल आउट ईच अदर, नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0. दैट मीन्स एनी इन दिस मटेरियल में any magnetic movements are there in this में, because दोनों कैंसिल हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0. such material is called diamagnetic substance. Okay, in this में no atomic dipoles, no atomic dipoles. dipoles ही नहीं है एलन होने के लिए. in this material में no dipoles, पूरा कैंसिल हो जा रहा है, वेक्टोरियली कैंसिल हो जा रहा है. Okay, examples bismuth, copper, gold, this all comes under diamagnetic substance. Mercury, water, alcohol. MSET में they will ask some example, will give examples, they will tell which type of material it is. So थोड़ा some standard examples if you learn हो जाएगा. So diamagnetic substance ऐसा substance है where net magnetic moment is 0, no atomic dipoles exist in that metal. That's why ये repulsion कैसा होगा we'll see. Okay, covered. Okay. In diamagnetic substance, first of all, there is no atomic dipoles, no alignment occurs. ये तो मालूम है ना, no atomic dipoles. The induced dipole moment occurs which weakly opposes the applied field. जो applied field लगा रहा है ना, आगे आपको electromagnetic induction में you will study about Lenz's law. It will always opposes the external field. Okay, so when we go on applying the external magnetic field, the induced dipole moment are there, right? The induced मतलब see, when you apply external magnetic field, some of the electrons क्या होगा, उसका motion will change. उसका रोटेशन में जो भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, थोड़ा रोटेशन चेंज हो जाएगा. उसके वजह से दैट जो भी इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट आर देयर, वो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड में रहेगा. उसके वजह से ये अपोज होगा. ओके, सो ये क्यों होगा, ये लेंस लॉ में समझ में आएगा आपको आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में. दैट्स व्हाई हेंस डैमेज सब्सटेंस आर वीकली रिपेल्ड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. weakly repelled by applied magnetic field. आप कितना अप्लाई कर रहे हैं, मटेरियल सपोज मटेरियल इज देयर, इनिशियली देयर इज नो एटॉमिक डाइपोल्स. एटॉमिक डाइपोल्स क्यों नहीं है, बिकॉज वेक्टोरियली इट गेटिंग कैंसिल्ड. बट व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रॉन मोशन, सम ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल चेंज. उसके वजह से जो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट आ रहे हैं वो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज होगा. सो दैट्स व्हाई इट विल रिपल. दैट्स व्हाई व्हेन आई ब्रिंग मैग्नेट, द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस विल रन बैकवर्ड्स. रिपल्शन विल टेक प्लेस. ओके, covered.
So matlab if I take a material, if I apply external field is nothing but H, right? So induced dipole moments are there, right? Induced dipole moments वो कैसा आएगा? नॉर्थ साउथ आएगा, नॉर्थ साउथ आएगा, नॉर्थ साउथ। मतलब इसका 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 मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपल्शन होगा। ओके, दिस बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की वजह से। और इसका प्रॉपर्टीज लिखने वाला है, पूरा प्रॉपर्टीज वही मॉडल में ऑल प्रॉपर्टीज लिखने वाला है। ओके, चलो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड सब्सटेंस। You tell me I will be negative or positive in this. I magnetization, intensity of magnetization will be positive and negative. Dipole moments are opposite direction to that of external field, right? I and H का relationship में I equal to zeta H, right? H and I are opposite, so I is negative, right? So लिखो magnetization is slightly negative due to the induced magnetic moment की वजह से I is negative. Now susceptibility क्या होगा? Susceptibility is negative आएगा because I is negative. I equals zeta H, right? So zeta will also will be negative. And example 10 power of minus 5 for copper रहेगा zeta, very small रहेगा value susceptibility. Now okay, चलो now when damaged substance is placed inside the magnetic field, देखो field में inside में लगाने से the magnetic field lines becomes less dense in the diamagnetic material. देखो you tell me ये डाइपोल इंड्यूस डाइपोल की वजह से ये अपोज कर रहे हैं ना, ये फील्ड इज गेटिंग अपोज, उसके वजह से क्या होगा? व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज कमिंग ये पूरा उस तरफ जाएगा, ये इसमें कम रहेगा, लेस डेंस रहेगा, बिकॉज अपोजिट रिपल कर रहे हैं ना, ये इनसाइड फील्ड इज गेटिंग रिपल टू द एक्सटर्नल फील्ड, दैट्स व्हाई क्या होगा? इनसाइड में लेस डेंस इन द डायमेट्रिक मटेरियल, इनसाइड में लेस डेंस होगा बिकॉज रिपल है। अगर अट्रैक्ट हुआ तो ये लाइंस पे ये लाइंस दोनों पास हो जाएगा इसमें। ये फॉर्मुला शीट नहीं भेजा, भेज दिया? आई डिड नॉट सेंड दिस वन, आई सेंड, आई विल सेंड इट। सो अभी तक जो भी फॉर्मुला शीट पूरा आ गया ना, अभी तक जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी ये सब कुछ आ गया ना टिल हाँ। Now tell me, suppose in a non-uniform field में if I put a diamond substance, it will move from stronger to weaker or weaker to stronger. Diamond substance is always, it will repel, right? When I place in a non-uniform field, मतलब मान लो ऐसा field है, if I place a diamond substance, this is a diamond substance, it will go from stronger to weaker or weaker to stronger. Which direction it will go? Stronger to weaker. Stronger to weaker. Okay, देखो in a non-uniform magnetic field, diamagnetic substance tends to move from stronger part to the weaker part of the magnetic field.
Okay. Stronger to weaker part of the magnetic field. Okay. And zeta and temperature का क्या relation है in pyramid substance का? What is the relation between temperature and zeta in this diamond substance? Okay. देखो. The behavior of diamond substance is independent of temperature. Susceptibility does not change with temperature. Susceptibility is independent of temperature. आप कितना भी increase करो. So I am drawing for susceptibility and temperature. देखो susceptibility negative, right? For diamond substance minus में draw करूंगा. Minus में as temperature कितना भी increase करो susceptibility is same. Constant value आएगा. In diamond substance. And mu r can see susceptibility is negative, right? Mu r value is less than 1 or greater than 1. Mu r value. Susceptibility is negative. Less than 1. Less than 1. देखो relative probability is less than 1. Why? Mu r is equal to 1 plus zeta. So zeta is negative means mu r is less than 1. Khatam, diagram done. These properties only same repeated with the para and ferro. So tomorrow this chapter done.